हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एट ईज। आज हम नम्स एमडीकैट फिजिक्स पोर्शन के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। मेरी पहली वीडियो फिजिक्स नम्स एमडीकैट पोर्शन की मेरी पहली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। जिसने वो नहीं देखी पहले वो देख लें, ये उसका सेकंड पार्ट है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमारे नीचे दिए गए में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट इज इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट अलाउज इट टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड डायमेंशन आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस हैविंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स contained in the container is alpha is हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज for a gas of volume in its equilibrium state, if the pressure does not change with time, then total kinetic energy of gas is constant because collision must be elastic. नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर वे टू स्टडी द साइनोसॉइडल वेव ऑफ द वोल्टेजेस। वोल्टेज इज कनेक्टेड टू वाई इनपुट एंड द टाइम बेस इज स्विच्ड ऑन। नेक्स्ट एमसीक्यू इलेक्ट्रॉन गन इन कैथोड रेज oscilloscope contain filament, cathode, grid and anode. Next MCQ था हमारे पास in which of the following the change in internal energy is more, change is zero in both. Next MCQ था हमारे पास pressure volume graph of system A and B are plotted under isothermal and adiabatic process. Which of the following observation graph represent the two system? तो ये आपको जो ग्राफ वाला टॉपिक है आपको थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक में जो दिए गए हैं उसको अच्छे तरीके से आपको देखना है। पेपर में कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज एन आइसोथर्मल। ये भी वही पिछले एमसीक्यूज में कहूंगा कि आप थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर हमारे फिजिक्स के 11 चैप्टर है हमारा जो पीटीबी के अकॉर्डिंग, उसमें जो ग्राफ्स दिए गए हैं बुक में उसको अच्छी तरीके से देखें कि कर्व किस में हो रही है, बेंड किस में हो रही है, स्ट्रेट किस में है, तो इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है if 2A current passes through a resistor when connected to a certain battery, if the resistance is replaced by double resistance, then the current will be 1A. Next MCQ है हमारे पास in helium neon laser population inversion of dash atom is achieved which emit radiation when they are stimulated to fall at lower level. तो neon हमारा right answer है। Next MCQ 3 resistors each having value R are connected as shown in figure. What is the equivalence resistance between X and Y? तो हमारा right answer है 3R 3 resistance. Next MCQ है हमारे पास if the number of turns of solenoid circular coil is doubled but the current in the coil and radius of coil remains same, then what will be the magnetic flux density produced by the coil? तो हमारा right answer जो इसके अकॉर्डिंग है वो है हमारे पास magnetic flux density will be doubled. नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास टू लॉन्ग पैरेलल वायर 1 एंड वायर 2 रिपेल ईच अदर एज शोन इन फिगर, व्हाट कुड बी रीजन? तो हमारे पास जो राइट आंसर है बोथ कैरी करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज द डायग्राम शो वायर कैरिंग अ करंट प्लेस्ड द पोल्स ऑफ मैग्नेट इन विच डायरेक्शन डज द फोर्स ऑन द वायर एक्ट? तो डाउनवर्ड की तरफ डायरेक्शन फोर्स एक्ट करेगी वायर पर। नेक्स्ट एमसीक्यू द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज द ऑर्डर ऑफ 10 मीटर, हमारा राइट आंसर है। लेजर बीम कैन बी यूज टू जनरेट 3-dimensional image of object in a process called holography. देन नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास है वो है हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लेजर? देयर इज अ पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑफ फोटॉन्स एक्स आर वाई एफ वायर 1 and 2 F and S1, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंसेस। तो हमारा जो बीटा आंसर है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है
electrons being emitted by the solids through photoelectric effect when irritated with electromagnetic radiation. Right answer इसका हमारे पास है excited electrons going to back to lower energy states immediately by releasing energy is right answer हमारा. Next MCQ है when electrons lose all their kinetic energy in first collision, the entire kinetic appears as a X-ray photon of energy is हमारा right answer है alpha. Kinetic energy is equal to EV. Next answer is the characteristic X spectrum is due to the bombardment of target material by electrons is right answer. Next answer is ionizing capacity of gamma rays is less than both alpha and beta particles. Next MCQ is half-life of radioactive element is inversely proportional to the decay constant के. Next MCQ is the transformer of a neutron into proton in the nucleus given rise to emission of beta particle is the right answer. Next MCQ है हमारे पास the ratio of rate of decay of a parent atom to number of radioactive nuclei present at that time is equal to decay constant of radioactive element. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एस्टिमेट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन पेशेंट. तो सोडियम 24 इज यूज टू सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द पेशेंट. नेक्स्ट एमसीक्यू है फॉर द रेडियोथेरेपी ऑफ अ पेशेंट इट इज रिक्वायर्ड टू डबल द अब्सॉर्ब्ड डोज इन ग्रे. व्हाट स्टेप मस्ट बी टेकन? एनर्जी मस्ट बी डबल. नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास वन मेथड ऑफ क्रिएटिंग एन इन्वर्टेड पॉपुलेशन इज नाउन एज ऑप्टिकल पंपिंग. Next MCQs in population inversion, ruby laser atom can reside in the excited state for 10-8 हमारा right answer. Next MCQs है हमारे पास if electrons of charge E moving with velocity are accelerated through a potential difference V and strike a metal target, then velocity of electron is 2 VEM हमारा right answer. Next MCQs in X-ray tube electron after being accelerated through velocity strike the target, then the wavelength of emitted X-rays is equal to HCEVA हमारा राइट आंसर है. नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास द रिएक्शन, ये जो हमारे पास रिएक्शन गिवन है द इलेक्ट्रॉन ईट एंड इमिट्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इमिट हो रहे हैं. नेक्स्ट एमसीक्यूज according to the equation particles what are the atomic and mass number of Y, Z6 and A12 हमारे पास right answer. then next MCQ है हमारे पास a certain radioactive nuclide of mass number X decay of beta emission and alpha emission to a second nuclide of mass number which are following correctly related X and T. तो हमारा right answer alpha में given है. next MCQ during the decay of radioactive isotope 90X 232 to a stable isotope 6 alpha particles and 4 beta particles are emitted. What is the atomic number and mass number of the stable isotopes? तो हमारा right answer है delta में Z is equal to 82 and alpha A is equal to 208. next MCQ है हमारे पास cobalt 60 is used in medicine and is an intense source of Y rays जिसको हम गैमा रेज भी कहते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास है इन फ्लूइड फ्लो फॉर द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट वन एंड इज डबल्ड व्हेन विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट दिस एंड इज हाफ. Next MCQ value of least distance vision of normal eyes is 25 centimeter. Next MCQ the distance between the two dark edges of fringes is mathematically written as delta Y is equal to lambda DL हमारा right answer. next MCQ in young double slit experiment the slit separation distance between screen and slit fringe separation then the wavelength of light is lambda is equal to 3.25 into 10 की power 7 meter. next MCQs in normal instrument adjacent of compound microscope the eyepiece is positioned so that the final image is formed at near point हमारा right answer है. next MCQ
MCQs हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अल्फा में ही गिवन है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट MCQs, a body is having weight 20 Newton when the elevator is descend with the A is equal to 0.1 meter per second, then the value of tension is 1.98 हमारा न्यूटन राइट आंसर है। सोडियम 24 हैज हाफ लाइफ ऑफ 15 आवर्स एंड इज यूज्ड इन मेडिसिन टू एस्टिमेट प्लाज्मा ब्लड वॉल्यूम। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन बेस यूनिट इज केल्विन। द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज ml-1T-square in William cloud chamber which of the following tracks represent beta particle। तो 40 तो सी हमारे पास। नेक्स्ट MCQ is the mass flow per second of fluid is given by P capital small v, then the dimension of coefficient viscosity ml-1T-1 right answer। Next MCQ is what should be the light of simple pendulum whose period is 6.28 second at a place where G is equal to 10 meter per square is 10 meter। Next MCQ है हमारे पास what should be the ratio of kinetic energy to total energy for simple harmonic accelerated alpha is right answer। An observer moves with velocity toward a stationary source, then the number of wave received in 1 second is charge is right। The next MCQ is the strain energy in a deformed energy stored in the form of potential energy। Next MCQ is हमारे पास a wire of area of cross sectional and original subjected in a load, second wire of same material with an area and length subjected to the same load। If the extension in the first wire is x and second wire, find the ratio is 11 हमारा right answer है। Two sample of gases 1 and 2 are taken at the same temperature and pressure, but the ratio of number of their gases is V1 V2 is equal to 2 ratio 3। What is the ratio of number of moles of gas samples? 2 ratio 3। नेक्स्ट MCQ था हमारे पास रेशियो मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस हैविंग प्रेशर एंड डेंसिटी इज गिवन बाय 3p p हमारे पास राइट आंसर है। व्हेन द रेशियो ऑफ गैस चेंजेस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर द गैस इज सेड टू बी अंडरगो आइसोथर्मल। द नेक्स्ट MCQ है व्हाट इज द 273 केल्विन ऑन द सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज हमारा राइट आंसर है 0.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास इफ हीट Q1 is absorbed at temperature T and heat Q is absorbed at temperature of the triple point of water, the unknown temperature of system is 273.16 Q1 and Q2। Next MCQ is if the fundamental logic gates are connected as AB, what are the mathematical notation for the for this logic gate is A plus B dot A plus B। Next MCQ is which combinations of 7 identicals resistor each 2 ohm gives rise to the resultant of 10-11 ohm। तो हमारा राइट आंसर है 2 पैरेलल एंड 5 सीरीज। ये थे हमारे पास नम्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड MCQs। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ नम्स के पास्ट पेपर्स और एक्सपेक्टेड MCQs की वीडियोस शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।